फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग पेरी पेरी चिकन। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को कट्स लगाएंगे ताकि हमारी जो मैरिनेट है वो अच्छे से चिकन के अंदर अब्सॉर्ब हो सके। मैं यहाँ पे टबास्को सॉस यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह चिली सॉस सिंपली जो आपके पास अवेलेबल हो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर रेडीमेड नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह इजीली पेरी पेरी मसाला को लेमन जूस के साथ मिक्स करके उसका भी एज अ मैरिनेड यूज़ कर सकते हैं। चिकन को हम दो हिस्सों में बेक करेंगे। पहले इसको सिल्वर फॉयल के साथ कवर करके बेक करेंगे, फिर दोबारा हम इसको अनकवर करके बगैर सिल्वर फॉयल के इसको बेक करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। कवर करने की वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा चिकन अच्छे से अपने ही स्टीम के अंदर जल्दी पक जाए। किसी भी चीज़ को बेक करने से पहले हमेशा ओवन को 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर प्री हीट कर लिया करें।